Okay. Is everything working? So as I understand it, I'm invited to give some reflections on the Dhamma for a while and then invite some questions. Is that correct? And we have time till about 2:30. I make a request for them. Yes. Brahma च लोकाधिपति सहमपति पतंजलि अंधिवरम अयाचत संतिद्ध सत्ता अपरख जातिका देशेषु धम्मम अनुकंपिमं पदम. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. The traditional subject of talks to lay people are dana, sila, and bhavana. जो पारंपरिक देशना गृहस्थों को दी जाती है उसमें दान, शील और भावना की चर्चा होती है. The dana, I actually make much of in many of the talks on both sila and on bhavana. I make much of the whole principle of dana. मैं कई बार अपनी देशना में शील और भावना का कम जिक्र करता हूँ और ज्यादा दान की चर्चा का जिक्र करता हूँ. Dana, its basic level comes from a sense of, and to be practiced at all, has to come from a sense of I have enough. दान यदि ठीक से करना है तो इस भाव से होना चाहिए कि मेरे पास मेरी आवश्यकता के लिए काफी है. If you don't feel you've got enough, it's very difficult to practice dana. It's impossible to practice dana.
यदि आपको ऐसा महसूस होता हो कि मेरे पास सब अपने लिए सफिशिएंट नहीं है, तो दान देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। This feeling that you've got enough is a very good antidote to the feeling of I need more to make me happy, or I can't cope, so I need to push away from things. ये महसूस करना कि मेरे पास अपनी आवश्यकता के लिए पूरा है, दान देने में बहुत महत्वपूर्ण है, और हमको इस अतृप्ति की भावना से, इच्छा की भावना से कि मुझे और चाहिए, हमको बचा के रखता है। Which are the roots of greed and hatred. उससे हमारा ध्यान जो है ठीक से रह पाता है, और इन चीजों पे ध्यान नहीं देके धर्म पे ध्यान दे सकते हैं। Which are the roots of wanting to find some sort of satisfaction from the senses, or wanting to become, or wanting to cut away and bhavatana and vibhavatana. जब हमें एक तृप्ति का, संतुष्टि का भाव रहता है, तो मुझे कुछ और चाहिए, ऐसी भव तन्हा नहीं जागती, या मुझे ये हटाना है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी विभव तन्हा नहीं जागती। So dana is incredibly important. It was the last paramita that the bodhisattva practiced before the final birth. दान जो है बोधिसत्व की लास्ट, आखिरी जन्म से, पुनर्जन्म से पहले की महत्वपूर्ण पारमिता थी। And to recognize that sila, the practice of not killing, not stealing, not misusing your sexuality, not lying, and not indulging in or not taking anything that can cloud your judgment, is also a practice of dana. ये पहचाना कि शीलों का पालन करना, किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, विचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना, ये भी एक तरह से दान का ही स्वरूप है। To give even spittle to an ant is wholesome. यदि हम एक चींटी को भी थोड़ा सा, एक जरा सा टुकड़ा दे दें, वो भी एक कुशल कर्म दान का जैसा ही होता है। And of course, in giving things, there's consideration to be given about what one gives and how one gives and who one gives to. दान देते समय इसका भी ध्यान रखना होता है कि किसको दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस प्रकार दे रहे हैं। And often you see printed on books and places, you see the gift of Dhamma is the highest gift. कई जगह किताबों पे पीछे लिखा रहता है, धम्म दान सबसे उत्तम दान है। Yes, you've seen that printed on books. Yeah. Well, who deserves the gift of Dhamma most? धर्म का दान सबसे अधिक किसके लिए, कौन डिजर्व करता है? I would suggest it's this person you live with 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. Give yourself the gift of Dhamma. यदि आप हर क्षण इस तरफ रहें, तो धर्म का दान देने, आपको धर्म का दान देने लायक है। Yeah? How do you give yourself the gift of Dhamma? आप अपने को किस तरह से धर्म का दान दे सकते हैं? Well, first of all, you give yourself
the gift of sila, तो सबसे पहले आप अपने को शील रूपी दान देते हैं, because it gives you a sense of protection. जो आपको एक तरह का संरक्षण देता है. It protects you from unwholesome actions. ये आपको अकुशल कर्म करने से रोकता है. So it's a really important thing to give yourself. ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम अपने आप को दे सकते हैं. If you give yourself the gift to be free from unwholesome actions, you give yourself the gift of fearlessness. You don't need to fear the consequences of your life. यदि आप अपने आप को एक शील का भेंट देते हैं तो एक तरह से अपने को निर्भयता का भी भेंट देते हैं, क्योंकि आपको कभी भी अपने कर्मों के दुष्परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती. You don't need to fear the consequences of what anybody might find out about you. और कोई भी आपके कर्मों के बारे में आप किसी के साथ कर्मों में इंटरफेयर नहीं करते. कोई आपके You give yourself the gift of fearlessness. तो आप अपने को निर्भयता का दान देते हैं. And that's an important gift. एक महत्वपूर्ण भेंट है, अपने लिए गिफ्ट है. It provides a foundation for your investigation of the truth and the living in accordance with that realization. ये आप अपने आप को एक अच्छा आधार बनता है जिससे कि आप सत्य का अन्वेषण कर सकें और आत्म साक्षात्कार कर सकें. And the gift of the sila is also the gift to all beings, because they don't have to fear you. और शील का दान जो अपने के लिए शील का भेंट देते हैं, तो हम एक तरह से दूसरों को भी शील का दान देते हैं, क्योंकि उससे वो अभय दान देते हैं कि वो आपसे डरेंगे नहीं. You know how you feel if somebody's trying to kill you or trying to steal from you or trying to misuse you sexually or lying to you, or that you can't trust them because their judgment has gone in some way. जब आपके साथ कोई शील तोड़ता है, कष्ट पहुंचाता है या चोरी करता है या विचार करता है या नशा करके आपको परेशान करता है, तो आप जानते हैं कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है. You know you have to fear a little bit around people that you feel are not keeping the precepts. तो हम हमेशा उन लोगों से डर के रहते हैं जो कि शील का पालन नहीं करते. So, for society, of course, the 5 precepts are the basis for human society. To the degree which the 5 precepts are being kept is the degree to which it's a human society and not an animal or a demon society. 5 शीलों का पालन करना एक समाज के लिए, मानव समाज के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अगर वो नहीं करते तो एक तरह से एक जानवरों जैसा जीवन हो जाता है. It's a demon society when the judgments have all gone, where there's no safety and there's just deception and license to indulge. या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो दानवों जैसा एक समाज हो जाता है जहाँ सब एक दूसरे से डरते रहते हैं. Or it's a state of war. Society breaks down and the 5 precepts are not kept. और जब 5 शील टूट जाते हैं तो फिर एक तरह से युद्ध की स्थिति हो जाती है, जैसे दानवों और देवताओं के युद्ध की बातें हम पढ़ते हैं. And most of the time, most people actually do, to a greater or lesser extent, keep the 5 precepts. It's just that we're Buddhists and we can do more than just keep the 5 precepts. We can know that we're keeping the 5 precepts. हम कई बार 5 शील इस भाव से रखते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं और 5 शील करके दूसरे लोग भी जान सकते हैं कि हम 5 शीलों का पालन करते हैं. And we can know
what it takes and how we feel around killing. और हम जानते हैं और महसूस कर सकते हैं कि किसी की हत्या करने के बारे में कैसा लगता है. And we can know how we feel around taking that which is not given, how cheating and depriving people of legitimate things that are theirs, how stealing, what gives us that impulse, and then how we feel about it. We can know that, and we can know that we train ourselves not to follow that impulse. हम जान सकते हैं कि कोई चीज को जो हमारी नहीं है उसको लेने से कैसा महसूस होता है, और ये भी समझ सकते हैं कि क्या इम्पल्स है, क्या हमारे अंदर प्रवृत्ति जागती है जिसके कारण कि हम ऐसा करते हैं, और हम उस जान के ये भी समझ सकते हैं किस तरह से उस प्रवृत्ति को रोका जाए. And we can be conscious that this is something that we are giving ourselves as an opportunity to train. हम सजग रह सकते हैं कि हम एक तरह से अपने लिए अपने को शिक्षा देने का मौका दे रहे हैं. This way of Buddhism is a way of training and of effort. भगवान की जो शिक्षा है, बुद्धिज्म जो है एक तरह से शिक्षा देने का और एक ट्रेनिंग करने का मार्ग है. This is a training ourselves in our physical actions, in our emotions, and in our consideration of what life is really about. ये हम अपने आप को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरह से कि किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए शरीर से, किस तरह के इमोशंस रखने चाहिए, यही सब एक तरह की ट्रेनिंग है. And we can give ourselves this opportunity. और हम अपने को एक मौका दे सकते हैं. And in giving ourselves this opportunity, we're not making any sort of claim or any sort of demand. We're just saying we're giving ourselves this, and so we can see, well, what happens when we say we will train, I will train using the 5 precepts. What happens? हम अपने को एक मौका देखते हैं ये देखने का कि अगर हम कह रहे हैं कि हम 5 शीलों में अपने आप को ट्रेनिंग करेंगे, शिक्षा देंगे उनकी ठीक से, तो उससे क्या होता है हम अपने अनुभव से जान सकते हैं. And this is giving ourselves an opportunity to practice bhavana. ये हम अपने आप को साधना करने का या भावना का मौका दे रहे हैं. Yeah. So we give ourselves fearlessness and the opportunity to practice by saying, I will train using the 5 precepts. जब हम ये कहते हैं कि हम अपने को 5 शीलों में ट्रेनिंग देंगे, शिक्षा देंगे, तो हम एक तरह से मौका दे रहे हैं अपने आप को शिक्षा 5 शीलों में पुष्ट होने का और भावना करने का, प्रैक्टिस करने का, धर्म की साधना करने का. And I will give other beings no reason to fear me. और जिस तरह से हम अपने को निर्भय बनाते हैं, उस तरह से दूसरों को भी मौका देते हैं कि वो हमारे से न डरें, तो एक तरह से अभय दान देते हैं. I will give them the opportunity to. When I feel frightened, it's not wrong to feel frightened, but there's a sense of closing down and wanting to protect. जब मैं डर जाता हूँ तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि डरना किस तरह से हमको कष्ट देता है. When I don't feel frightened, I feel ease, a sense of, oh, it's okay, I can be with this. और जब मैं डरता नहीं हूँ तो एक तरह से अच्छा लगता है, एक ऐसा भाव लगता है कि मैं इस जीवन को हैंडल कर सकता हूँ, मुझे डरने की कोई बात नहीं है. And if you can give other people the opportunity to feel that, or other beings to feel the opportunity to do that, then that's an incredible gift. और जब हम शील पालन करते हैं तो हम दूसरों को भी ऐसा महसूस करने का मौका देते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एक दान है जो दूसरों को दे रहे हैं. So this is dana, the important basis for our practice that encourages sila,
ये भी एक दान है जो बहुत आधार बनता है अच्छा हमारे शील का पालन करने का. And then with that, you've got a real basis for considering, well, how do I relate to life itself? और फिर उस आधार पे हम अपने लिए एक मजबूत नींव बनाते हैं कि किस तरह से हम जीवन के साथ अपना रिलेशनशिप रख सकते हैं, अपने जीवन को कैसे समझ सकते हैं in a way that brings nobility and makes life worthwhile. वो इस तरह से कि एक हमारा जीवन जो है जीने योग्य बने और एक हम अच्छे मानव बने. Yeah, it makes life worthwhile. And this is giving ourselves the Dhamma. ये हम उस तरह से अपने जीवन को जीने योग्य बनाते हैं और ये एक तरह से अपने को धम्म देना की बात कही जाती है. Which is the highest gift. जो धम्मदान जैसे कहा तो सबसे बड़ा उपहार है जो हम अपने को दे सकते हैं. Yeah, this is so we can know, well, this is dukkha, this is unsatisfactory. When I take things personally, it's unsatisfactory. हम सब समझ सकते हैं कि ये दुख है और जब हम चीजों को अपने आत्मभाव से देखते हैं तो दुख होता है और ये हम सीख सकते हैं. I'm always going to be associated with what I don't like, separated from what I like, experience grief, sorrow, lamentation, and despair. I'm going to worry about how old I am or how young I am, and I'm going to get sick. This is all part of this sense of separation which we experience. और ये जो एक भाव रहता है भिन्नता का संसार से विभिन्न होने का तो उसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि जो प्रिय हैं उनसे बिछुड़ना भी होगा, जो अप्रिय हैं उनसे मिलना भी होगा और ये सब एक प्रकृति का चक्र है जो चलता रहता है और ये हम इसको ठीक से समझ सकते हैं. And then we don't make any further problems about it. We abandon the cause of further problems by not feeling inadequate in this. और फिर हम इस वस्तु स्थिति के बारे में को और इसको एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनाते और ये नहीं समझते कि हम इसके बारे में हम कुछ हमारे में कमी है तो ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ये हम समझते हैं कि ये प्रकृति का नियम है. The sense of tanha is a sense of thirst or a sense of craving or a sense of compulsion. तृष्णा जो है एक तरह से अति तीव्र इच्छा है, एक हमको बाध्य कर देती है ये चीज मुझे चाहिए ये चीज नहीं चाहिए. And if we have the sense of we're practicing dana, in that act of practicing dana, we cannot feel the sense of craving or thirst or inadequacy. और जब हम इसको दान की तरह महसूस करते हैं, दान अपने को धर्म का दान दे रहे हैं तो उसमें हम इस तरह से भाव नहीं जाग सकता कि हम कुछ हमारे में कुछ कमी है. Because it's a giving. When you give something, you're not making a bargain. You're not saying I'll do this in order to get something. जब आप दान करते हैं देते हैं तो आप कोई भाव नहीं करते, एक तरह से व्यापार नहीं करते कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि इससे मुझे कुछ मिलेगा. And you're not giving in order to get rid of something. You're giving something because you want to offer it. You want to give it. You feel that this is something I can do. I can offer. और जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम देने के भाव से देते हैं, ना कि इस भाव से कि मुझे कुछ चीज से छुटकारा पाना है. And and then when you practice all of the Eightfold Path, you do that as a gift of Dhamma, a gift of Dhamma to yourself, Dhamma Dana. और जब हम अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं तो हम उसको भी अपने को दिया गया धर्म का दान समझ के काम करते हैं. So this is the encouragement. Yeah, but I would say, dana, sila, bhavana. All of it is to do with
practicing the Eightfold Path, all of it's to do with feeling that this is something that I can do, I can offer, I can give. तो इस प्रकार से जब हम समझते हैं तो दान, शील और भावना और अष्टांगिक मार्ग का पालन भी हम उस एटीट्यूड से कर सकते हैं कि मैं कुछ दे रहा हूँ, मैं अपने आप को धर्म का दान दे रहा हूँ. I think the fifth precept of not taking any alcohol or any drugs. One can say it's the least important because it's stuck on the end, and it's not actually mentioned in the Eightfold Paths explicitly, but it's to do with guarding your judgment, guarding your assessment of the situation, and not confusing it. जो पांचवा जो शील है कि हम नशा नहीं करेंगे या ड्रग्स वगैरह अल्कोहल वगैरह नहीं लेंगे, वो अंतिम शील माना जाता है. कई लोग समझते हैं कि वो अष्टांगिक मार्ग में उस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन नहीं आता. तो उसका लेकिन महत्व ये है कि अगर हम ऐसे पदार्थ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जजमेंट जो है, जो हमारी समझ है, वो धूमिल हो जाती है और हम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाते. So it's to do with samasati and samavayamo. इसका संबंध अधिक इस शील से अधिक इसका संबंध सम्यक विसति और सम्यक व्यायाम से है. Samma is you've probably, it's often translated as right or correct or something like that. सम्मा पाली शब्द का अंग्रेजी में जैसे ट्रांसलेशन राइट या ठीक कहते हैं, जैसे हम हिंदी में सम्यक कहते हैं, तो हिंदी का सम्यक बिल्कुल अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन है. But one of the translations that I quite like is in tune with Dhamma. एक ट्रांसलेशन अजान कह रहे हैं जो उनको पसंद आता है इंग्लिश में, इन ट्यून विद धम्मा. सम्यक शब्द जो है उसका इन हिंदी वी हैव द वर्ड सम्यक, which is in tune with, which exactly means that. Yeah. Which is appropriate. And appropriate, like in when somebody is out of tune or in tune, it's, you can hear it. It's distorted. Yeah. कारण जैसे कि म्यूजिक में अगर कोई चीज सुर में ना हो तो वो हमको मालूम पड़ती है, तो इसी तरह से वो सम्मा का ट्रांसलेशन बेसुरा भी करते हैं एक तरह से. And Dhamma is described as that which is revealed by wisdom. और जो धम्म है वो उसको कहा जाता है जो हमारी प्रज्ञा से हमको साक्षात्कार होता है, मालूम पड़ता है. It's something that now it's in an integral part of every moment and everything. और वो यही पस्तिकों का ट्रांसलेट मतलब ये कहते हैं कि वो अभी इसी समय उपलब्ध है और वो प्रतिक्षण हमारे लिए उपलब्ध रहता है. And and yet at the same time it's outside of time, it's eternal, akaliko. और वो अकालिको भी है, मतलब समय से के बंधन में नहीं रहता है. That's interesting because that almost seems like they're almost a contradiction, but they're both to do with not something that you think about. You've got a description. Sorry. Namo tassa bhagavato
So yes, the sense of something that is not about thinking about the Dhamma, it's about realizing the Dhamma, that which is apparent here and now, sanditiko and akaliko, is not something to be, thought cannot trap it. धम्म की जब बात कही जाती है संदिग्ध को सकालिक को, तो उसका तात्पर्य है कि वो अभी इसी समय प्रत्यक्ष है और कालातीत है, तो इसलिए विचारों से वो समझ पकड़ा नहीं जा सकता, वो साक्षात्कार करके अनुभूत हो सकता है. And then ehipasiko, that quality that is inviting or encouraging, I think is an important aspect of Dhamma. It points to something that you can't really think about, but you experience. धम्म जो है वो हम केवल विचार नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते हैं, और फिर वो आपको आपको एक तरह से इनवाइट करता है कि आओ देखो, अनुभव करो. Something about the Dhamma is something that is somehow attractive or beautiful. It leads you, it invites you to investigate. धम्म जो है वो सचमुच में ऐसा सुंदर है कि वो आपको एक आमंत्रण करता है कि आओ देखो, ठीक से जांचो. And if you think of your sila and your dana and your bhavana in that light, so it's samma, then you can see that the practice of sila is something that is, wherever you see it being practiced, there's a sense of that's beautiful behavior. जब आप दान, शील और भावना के बारे में विचार करते हैं और देखते हैं कि वो भी एक तरह से एक सुंदर व्यवहार है जो एक हम अनुभव कर सकते हैं. Because it's also openaiko, which is also that sense of ease that comes with a sense of inward and outward peace. और जो शब्द आता है ओपन आई को, उसको अजान कह रहे हैं कि वो एक तरह से हमको एक अच्छा महसूस करता है कि जब हम भीतर और बाहर की चीजों को समझते हैं. You're giving yourself the Dhamma, you're giving yourself the highest gift, because pachatangwe ditabo vinyuhi, it is something to be realized, each wise person for themselves. धर्म का दान हम अपने के लिए देते हैं, तो ऐसा है कि जो अंतिम शब्द आते हैं पश्चात्तंग वेदितव्यो विन्योहि, कि वो हम अपने भीतर, एक समझदार आदमी अपने भीतर उसका साक्षात्कार कर सकता है, उसको जान सकता है. So you give yourself the Dhamma that is apparent here and now, outside of time, beautiful and encouraging, leading to a sense of inward and outward peace, and something that you realize for yourself. जब इस तरह से धम्म की व्याख्या को समझते हैं, हम ऐसा करते हैं जिससे कि हम अपने बाहर और भीतर को जीवन को सुंदर बना सकते हैं और उसको डायरेक्ट अनुभव से, डायरेक्ट साक्षात्कार करके महसूस कर सकते हैं. Yes, so this is the gift of Dhamma, and something that, you know, if you want to know whether it's working for you, notice how you are internally and externally. Are unwholesome qualities decreasing and our wholesome qualities increasing? This is your test of your spiritual progress. यदि अब आप अपनी साधना की प्रगति, धर्म के मार्ग की प्रगति को जानना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके कुशल गुण जो हैं, जो अच्छे सद्गुण हैं, वो बढ़ रहे हैं और दुर्गुण जो है घट रहे हैं. तो सच यही एक हमारा धर्म में प्रगति का एक मापदंड है. So I offer that for your consideration, and I'm welcome to see if there's anything that I've badly explained or haven't explained enough, or if there's any way that I can
यदि वो अजान अपना प्रवचन समाप्त करते हुए कह रहे हैं कि आप विचार करके देखें और कि अगर वो चीज़ अगर ठीक से समझ ना आई हो तो उसकी प्रश्न पूछ सकते हैं. And thank you, translator, for working so hard for that. अनुमोदन. अन्नमयं धम्मकथाय साधुकारं ददामसे. साधु 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 अनुमोदन. We can have question answers now. Pardon? We can have question answers now. Yes, if you have any questions, I'm willing to. यदि कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें. Yes. John, I had a question on Sila. You spoke about morality and you talked about the fifth precept of the consumption of intoxications. This is a question that I've reflected on quite a bit because I actually have a brother-in-law who enjoys the occasional glass or two of whiskey. And on multiple occasions, I'm invited to many parties, and he always asks me in the context of it being a moral issue, because he usually tells me I don't feel I'm an immoral person if I like to enjoy my glass of wine or my glass of whiskey. And it's very hard for me to call him immoral, to be able to enjoy that if that gives him a sense of ease at the end of his day. So why do we adjoin the final precepts is it even a moral issue at all? Can you translate that into Hindi so that there's no? मैंने बस सवाल पूछा है पांचवें सीला पे, जो मैंने अपने एक जीजाजी का उदाहरण दिया है जो कभी कभार विस्की और वाइन कंज्यूम करते हैं और मेरे से हमेशा पूछते हैं कि क्या ये मुझको एक इमोरल इंसान बनाता है. तो मेरे पास इसके लिए उत्तर हमेशा नहीं रहता, क्योंकि मैं खुद नहीं सोचता कि अगर उनको उससे आराम या शांति मिलती हो और अगर साधना नहीं करते हो तो वो एक इमोरल इंसान है, अगर वो किसी का बुरा नहीं कर रहे या अपने लिए ही अपने 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 लिए कर रहे हैं. तो ये मेरा सवाल है. Thank you. I've not really considered it in quite that way. So the fifth precept is about clarity of judgment. If you've said to yourself, you've publicly declared that you'll keep the five precepts, then technically you break it if you just sip a little bit of alcohol. You don't break it if somebody holds you down and pries open your mouth and then pours the alcohol in. अजान कह रहे हैं कि यदि आपने 5 शील लिए हैं और अगर आप एक घूंट भी किसी शराब की पीते हैं तो आप शील तोड़ते हैं. बस एक ये है कि कोई अगर आपको जबरदस्ती मुंह पकड़ के उसमें डाल देता है मुंह में तो फिर आप शील नहीं तोड़ रहे. And there's the stories. The stories of
of judgments that are made under the influence of alcohol. The trouble with it, with alcohol and other drugs, is that you don't, what it does is it stops one really knowing how your judgments are. That's why in the, and I expect also in India, it's an offense to drive under the influence of alcohol. And the amount of alcohol that you need to affect your judgment driving, you don't feel drunk. अजान समझा रहे हैं कि जो अल्कोहल की जो एक शराब की एक क्वालिटी होती है कि जब वो कोई पीता है तो उसको ये समझ नहीं आता कि उसकी जजमेंट जो है वो खराब हो रही है, और शायद इसी कारण से एक नियम भी है कि आप शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि हर एक को लगता है कि मैं थोड़ी सी शराब पी है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नियम भी इसीलिए बनाया गया है कि जजमेंट खराब हो जाती है और एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है. They did, when they were trying to work out how much alcohol you should be allowed when you were drunk, to drive, to drink and drive, they did tests with very experienced drivers driving through narrow markers. And when they were not drunk, they knew they could judge the distances well. When they were drunk, they thought that they could judge the distances well, but they couldn't. And they were surprised how their judgment was affected. It's your assessment of the situation that's affected. अजान एक उदाहरण दे रहे हैं कि कई बार ये टेस्ट करने की कोशिश की गई कि कितने शराब पीने से जजमेंट खराब होती है, तो ड्राइवर्स जो ट्रक के ड्राइवर होते हैं उनसे टेस्ट कि वो छोटी सी जगह में से निकालने को कहा थे, तो जब वो नहीं पी शराब पी तो बड़े आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन जब शराब पी के चलाते हैं तो उनको लगता है कि हमारी जजमेंट खराब नहीं है, लेकिन वो जजमेंट गलत करते हैं और वो पता चल जाता है कि उनकी चलाने में गड़बड़ हो रही है. And it's that giving up of the human capacity to correctly assess what is happening. तो जो शराब पीने का ये एक मुख्य बात जैसे अजान समझा रहे हैं कि शराब पीने के बाद हमारी वो क्षमता जो है ये जानने की कि मैं ठीक समझ रहा हूँ परिस्थिति को या नहीं, वो क्षमता कम हो जाती है, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता कि हम ठीक से असेस नहीं कर पा रहे हैं. And not knowing that you can't properly assess what's happening. ये न जान पाना कि मैं ठीक से असेस नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है, ये एक बड़ी मुश्किल परिस्थिति हो जाती है. And that's why sometimes they say when you take things that affect your judgment like that, what you're doing is taking yourself down to the level of an animal. कह रहे हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि शराब पीने से आपकी जो क्षमता है आप जज करने की सही बुरे की क्या ठीक है वो बाधित हो जाती है, और फिर हम एक पशुकृत व्यवहार तक पहुंच सकते हैं. अगर हमारी जजमेंट खराब हो जाए तो पता ही नहीं चलता कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये सामान्य है, लेकिन वो पशुवत व्यवहार होने लगता है. And animals, they don't know the unskillful karma that they're doing, and not knowing the unskillful karma that you're doing or that an animal does makes it really difficult to stop. और क्योंकि वो जान नहीं पाते कि कोई एक अकुशल कर्म हो रहा है, समझ नहीं पाते, अपने कर्म को देख नहीं पाते ठीक से कि अकुशल कर्म हो रहा है, तो वो समझ नहीं पाते कि कब मुझे रुकना है, और रुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. And as you know, very, very stupid people think they never make mistakes. और जो बहुत मूर्ख भी लोग होते हैं वो भी ये समझते हैं कि वो कभी गलती नहीं करते. Very stupid people think they never ever make mistakes. और वो कभी भी इस तरह का विचार ही नहीं करते कि उनको लगता है कि हम तो कभी गलती करते ही नहीं हैं. Stupid people don't learn from their mistakes. और वो इसलिए उन अपनी गलतियों से सीख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि ये गलती हो रही है.
if you're a little bit clever, you learn from your mistakes. और अगर आप सजग रहेंगे तो आप अपनी गलतियों को, थोड़ी सी भी अगर समझदारी हो तो अपनी गलतियों को पहचान पाते हैं कि ये गलत है. And if you're cleverer still, you educate yourself or get educated by people and learn from other people's mistakes. और फिर अगर थोड़ी सी और समझदारी हो तो आप जानते हैं कि ये गलत है और फिर अपने आप को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. And education is when you learn from other people's mistakes, isn't it? और जो शिक्षा है सचमुच में वो इस तरह से है कि हम दूसरों की गलती से सीखते हैं. You learn about what other people have done that wasn't skillful, and then you learn from it. और जब कोई लोग अकुशल काम करते हैं तो अगर हम वो जानते हैं तो फिर हम उससे सीखते हैं. So is it a moral issue to deliberately take your judgment down, well, not down, but to a state where you really cannot know what your judgment is? ये अजान पूछ रहे हैं क्या ये एक नैतिक इशू है कि हम अपनी ऐसा कुछ कर्म कर रहे हैं जिससे हमारे को अपनी जजमेंट ही हमारी क्लाउड हो जाती है, हमारी जजमेंट करने की क्षमता कम हो जाती है. And it's rather frightening because many decisions in all sorts of board meetings and all sorts of political situations are taken with people who really don't know what they're doing. और ये बहुत ही खतरनाक सी स्थिति है. कई बार कंपनियों में, बोर्ड मीटिंग्स में या बड़े बड़े पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी लोग नशे में रह के डिसीजन करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जजमेंट की क्षमता जो है वो क्लाउड हो गई, वो धूमिल हो गई है. बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है. It's the old thing, if you try to get the people you're dealing with drunk, you try to not drink so much so that you know that you're going to get a better deal out of it. ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जो शराब पिए हुए हैं उनको लगता नहीं है कि वो पिए हुए हैं और दूसरों को कहते हैं कि. But then, okay, so that's alcohol. I'm not making a whole business about it, and I'm not making it into a whole business, but I'm just saying it's dangerous. Now, the other drugs that are dangerous are the ones that give you a false sense of insight, or give you an insight, but that you haven't really in some way earned. वो कह रहे हैं कि अल्कोहल के बारे में मेरे विचार है और मैं इसको कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन दूसरी बात जो है, ऐसी ड्रग्स हैं जो रिक्रिएशनल ड्रग्स कहा जाता है, जिनसे कि ऐसा लगता है कि हमारे को इनसाइट डेवलप हो रही है. Ayahuasca and all the different things that give you a different buzz or different wow. ऐसी ड्रग्स हैं, मशरूम्स वगैरह, जिनसे कि साइकेडेलिक ड्रग्स हैं, जिनसे कि हमारा ऐसे कॉन्शियसनेस ही डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो ऐसे लगता है कि हमें बहुत विलक्षण अनुभूतियां हो रही हैं. What somebody told me years and years ago about that is that whatever insights we can't really know how true they are, but also you haven't really paid for them. और जो इस तरह से कुछ इंसाइट डेवलप होती हैं, आपको ये भी नहीं पता रहता कि वो ठीक है कि गलत है, और अगर वो ठीक भी है तो आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया है, तो वो फिर आपके लिए कभी भी स्थिर या स्थायी हो ही नहीं सकती. So you put yourself in debt. एक तरह से आप ऋणी हो जाते हैं, sometimes quite heavily in debt. उस दवाई के ऋणी हो जाते हैं, उस ड्रग के ऋणी हो जाते हैं. And so they're not in that way really safe. फिर वो एक सुरक्षित नहीं रहती वो चीज. And you don't know what you've really done. You have no real clear idea of how you got to where you were. क्योंकि आपको होश ही नहीं रहता कि आप जहाँ पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे और आपने किया क्या है, क्योंकि उनसे हमारा मानस जो है बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाता है. And at least in this strange world that we live in right now, we are at least familiar with how we experience our creation, which is time and space, because time and space is something that we're actually creating. इस संसार में जिसमें
हम हैं, हमें मालूम पड़ता है कि टाइम और स्पेस में चीजें हो रही हैं, लेकिन ड्रग्स के कारण वो सब कंफ्यूजन हो जाता है। Because time and space are not absolute. Strangely enough, but at least within what our cultural conditioning and our things have developed over this 70 years or so, we're at least able to operate within it. ये बात सत्य है कि समय और टाइम और स्पेस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन में जो कन्वेंशनल रियलिटी है उसमें ठीक से अपने आप को ऑपरेट तो कर पाते हैं, अगर हमको उसके प्रति, उसकी वास्तविकता के प्रति सजग रहें तो। And we can at least train within it, within the judgments and the experiences that we have. और हम अभी इतने साल जीवन भर हम ट्रेनिंग हो जाती है कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस टाइम के अंदर किस तरह से चीजें चलती हैं, किस तरह से अनुभव होता है, और हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। And keeping the 5 precepts keeps you safe. 5 शीलों का पालन करने से हमको सुरक्षित रखता है कि हम किसी खतरे में ना पड़ जाएं। And it keeps other beings safe. And that safety is an incredible gift of fearlessness, because you can't really be without fear unless you feel safe. और वो जो हमारी सुरक्षा है वो एक दूसरों को भी हम सुरक्षा देते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब तक हम अपने को सुरक्षित नहीं मानेंगे तो हमारा जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। And the animal world is a complete fear realm. और जो पशुओं का लोक है वो कंप्लीटली भय आक्रांत रहते हैं, जबकि मनुष्य, शीलवान मनुष्य भय से मुक्त रह सकते हैं। It's a complete fear realm. Animals are most of the time instinctively just terrified. जानवर जो है अपने इंस्टिंक्टिवली, अपने सहज रूप में हमेशा डरे ही रहते हैं। Am I going to have enough to eat, or is something going to eat me? क्या मैं कुछ खाऊंगा, खाने के लिए मेरे पास होगा, या कोई मुझे खा जाएगा? इस तरह का भाव हमेशा बना ही रहता है पशुओं में। That's the basic animal realm. ये पशु लोक है ये सारा। The human realm doesn't have to be that. और मनुष्य लोक को इस तरह का होने की आवश्यकता नहीं है। हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। And the 5 precepts are something that only really humans can decide to train themselves in. और 5 शील जो है वो केवल मनुष्य ही अपने आप को उसमें ट्रेन कर सकते हैं, पर पशुओं के लिए ये संभव नहीं है। And you can't trust somebody whose judgment's gone. हम किसी ऐसे व्यक्ति को विश्वास नहीं कर सकते जिसकी कि अपनी जजमेंट की क्षमता You have धूमिल to हो be a गई। bit careful about them. They have to be a bit more careful themselves. They put themselves in a fear realm. क्योंकि वो उनको जो लोग इस तरह से जजमेंट शराब के कारण उनकी खराब हो जाती है, तो अपने आप को एक ऐसे लोक में डाल देते हैं जो कि भय का रोग है, क्योंकि उनकी अपनी जजमेंट के बारे में उनको मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। But never, ever, ever use the 5 precepts as a weapon. बट दूसरी ओर ये भी आवश्यक है कि 5 शीलों को हम एक हथियार की तरह दूसरों के ऊपर ना इस्तेमाल करें। You should keep the 5 precepts. You're a terrible person for not keeping the 5 precepts. ये कहना कि तुम किसी को कि तुम 5 शील नहीं रखते हो, तुम बहुत ही बुरे आदमी हो, वो ठीक नहीं है। You will go to hell. तुम ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। That's just provoking fear again, and it's not a gift. तो ऐसी बात करने से हम दूसरे को डरा रहे हैं, तो ये एक दान नहीं है। So absolutely no blame to your friend. Absolutely no blame to your friend. If he wants to enjoy the whiskey or the wine, his business. तो इसलिए वो उत्तर में फाइनली कह रहे हैं कि जो आपके जो संबंधी है उनको कोई ब्लेम देने की जरूरत नहीं। अगर उनको वो ठीक लगता है तो उनको एंजॉय करने दीजिए, उनका विचार का मतलब। You just know that you have to be a bit more careful around him when he's had a couple of glasses. बस आपको ख्याल रखने की जरूरत है कि जब वो पी रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने को सुरक्षित रखें। Yeah, and you don't let him drive. आप उनको गाड़ी न चलाने दें।
That's all. Just, you don't get into feeling that you're purer than him, or that you're in some way more holy or more wise or anything. Not a matter of judgment at all. तो किसी दूसरे के ऊपर जजमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम ऐसा महसूस करें कि हम उनसे ज्यादा पवित्र हैं, ज्यादा अच्छे हैं. जजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, बस हम अपने को सुरक्षित रखें. And no need to get into an argument about it. Say, if he says, well, this is not a moral issue, say, fine, just leave it, because he's not actually asked you. If he really asks you, then you can maybe explain a bit more, or try to explain a bit more. And then ask him, how do you feel, and why do you feel you need the alcohol? And it's not a huge deal. He's right. It's not a huge deal, but it is a huge deal. Yeah? It's not, and it is. It's not making an absolute about the sila. You're not trying to make the sila into an absolute. You're trying to encourage a sense of what's in harmony with Dhamma and what will actually lead to a further sense of peace. इसको कोई एक एब्सोल्यूट बनाने की जरूरत नहीं है. हम यदि वो पूछते हैं आपसे इसके बारे में तो आप समझा सकते हैं, लेकिन यदि वो एंजॉय कर रहे हैं तो फिर आप उनको अपराध बोध करने की जरूरत नहीं है. Does that help a little bit? I'm here for the first time, and I'm a little bit overwhelmed. A little bit what? Overwhelmed. Overwhelmed. Yeah, because after this retreat gets over, I am not sure about what I should be doing in my daily life that I can take value out of this retreat, considering how lazy and indisciplined I am. So I just need to know maybe what should I read? What should I practice? So any light in that direction will help me a lot. Can I repeat the question in Hindi? Repeat it in Hindi, yes. Yeah. So ये मेरा पहला अवसर है जब मैं ऐसी किसी रिट्रीट में आया हूँ. मुझे नहीं मालूम कि मुझे आगे क्या करना है जब ये रिट्रीट खत्म हो जाएगी. मुझे ये जानना है कि मैं क्या पढूं या क्या प्रैक्टिस करूं आगे के लिए. और मुझे पता है कि मैं बहुत इनडिसिप्लिन्ड, मेरे अंदर बहुत अनुशासनहीनता है, जिसकी वजह से मुझे जानना है कि मैं किस तरह से एक 0.0 से शुरू कर सकता हूँ. The short answer is I don't know. The long answer is try and see. If you can't keep the 5 precepts, if you feel you can't keep the 5 precepts every day for the rest of your life, and I must admit that when I first heard about them, I thought that if I take the 5 precepts, I am making a promise that I will never break them. And this was ridiculous. आजान कह रहे हैं कि अगर आप छोटा आंसर चाहते हैं तो मैं कहूँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर डिटेल आंसर मेरा ये है कि 5 शीलों को अगर आपको लगता है कि पालन करना बड़ा मुश्किल है, तो उसके बारे में वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि जब मैंने पहली बार 5 शीलों के बारे में विचार किया था तो ये सोचा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी शील नहीं तोड़ूंगा, तो मुझे लगा कि तो बहुत ही मुश्किल काम है. So what I usually say to people now is
why don't you try just keeping the 5 precepts really strictly on your birthday? तो अजान कहते हैं कि अभी मैं अब अगर कोई मुझसे कहता है कि मुश्किल है तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूँ कि आप अपने जन्मदिन के दिन ही 5 शील को ठीक से बहुत गहराई गंभीरता से पालन करके देखें। What day of the week were you born on? आप सप्ताह में किस दिन आप पैदा हुए थे, उस दिन का Were एक you दिन born का, on a Monday or a Tuesday or a Wednesday or a Thursday or a Friday or a Saturday or a Sunday? चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, हफ्ते का कोई भी दिन हो, उस पर्टिकुलर दिन पे आप शील का पालन करने का एक On विचार that day, कर you सकते have to keep the 5 precepts. Sorry, I'm not letting you get away with once a year. I'm saying once a week. तो मैं कह रहे हैं कि मैं आपको कोई ये स्ट्रिक्टली ये नहीं कह रहा कि आपको करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप विचार कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन पहले शुरू करें, हफ्ते में एक दिन जो मेरे जिस दिन मैं हफ्ते में पैदा हुआ था उस दिन मैं शील का पालन को गंभीरता से करूंगा, वहां से हम शुरू कर सकते हैं। It's more, the thing is to find a way to enjoy your life and have fun investigating it. तो एक तरीका अच्छा ये है कि हम अपने जीवन को सचमुच में एंजॉय करें और इस प्रक्रिया को भी विवेचन करके इन्वेस्टिगेट करके देखें। Yeah. With the meditation, you've got different things you can do with your meditation. Part of the meditation is a bit like doing exercise for your body. जो ध्यान है उसके बारे में एक तरीका है और उसमें एक ध्यान का एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम शरीर की व्यायाम करें ठीक से। And there are all sorts of exercises you can do for your body, yoga, different stretching exercises, even massage or running or weights or all these different things that you can do which keep your body strong and subtle. जैसे शरीर के लिए हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, योग है, वजन उठाना है, दौड़ना है या अन्य तरह के मसाज इत्यादि कार्यक्रम है जिससे कि हम शरीर को स्ट्रांग रख सकते हैं और वो सफल रख सकते हैं कि वो तैयार रहे, ठीक रहे। And the other aspect of things that you probably do with your body is you probably clean it from time to time, don't you? दूसरा एस्पेक्ट है कि हम उसको स्वच्छ रखें। Yeah, you probably bathe once or twice a day, yeah? और उसके लिए हम नहाते हैं दिन में। And you're also careful about where you put your body, so you're careful you don't tread in places where you're going to get dirty or go to places which are toxic or troublesome. और हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि ऐसी जगह ना जाएं जहाँ पे हमारा शरीर गंदा हो जाएगा या जहाँ पे कुछ व्यवधान है, जहाँ जाना है या जब कोई पॉइजनस एटमॉस्फेयर है वहाँ तो हम नहीं जाते हैं। You get careful about what gets stuck to your shoes and how you clean. और हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमारे जूतों में क्या लग गया, पाँव में क्या लग गया। And so be careful, and part of the meditation is about being careful about how you use your mind and how you relate to it and keeping it clean. And you need, both strength and insight as to what's happening, to know what's happening, so that you can do both. इसी तरह से जैसे शरीर को स्वच्छ रखते हैं वैसे मन को भी स्वच्छ रख सकते हैं। उसके लिए दो आवश्यकताएं हैं कि एक तो हमें क्षमता हो जानने की कि हम क्या हो रहा है मन में, और दूसरा हम उसको So a daily meditation practice is helpful, very, very helpful for basic cleanliness and basic stretching, basic exercise, keeping clean and healthy in your heart. जैसे शरीर के लिए वैसे ही मन के लिए ध्यान एक तरह का एक्सरसाइज है जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध रहे। And at least keep the 5 precepts on your birthday. एक हफ्ते में एक दिन आप 5 रख के देखें फिर। And then on the moon days, and there's one moon day a week. और फिर पूर्णिमा के दिन जो कि महीने में there's one moon day a week that follows the lunar calendar, the phases of the 4 quarters of the moon. या 4 जो उसके पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमियां जो आती हैं। You can be a lunatic
and follow the 8 precepts. 8 शील को पालन करने में आप जो चंद्रमा की 4 अवस्थाएं हैं उसको फॉलो कर सकते हैं. And then that means giving up that which is unnecessary, which is not eating in the afternoon, no entertainments, and no indulging in sleep. तो उसका उपोषित जो कहा जाता है उसका तात्पर्य है कि जो चीजें आवश्यक नहीं है उनको त्याग दें. कि दोपहर बाद खाएंगे नहीं, कोई ऐसी और क्रियाकलाप नहीं करेंगे जिससे कि मन बेचैन हो. And if anybody tells you why you shouldn't drink, asks you why don't you drink, you can say, well, my doctor says it's not a good idea. अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्यों नहीं पीते हैं तो कह दीजिए कि मेरे डॉक्टर ने कहा है कि एक अच्छा है. Because you know the supreme doctor is the Lord Buddha. आप जानते हैं कि सबसे बड़े डॉक्टर भगवान बुद्ध ही हैं. Well, I can't drink. My doctor says it's a very bad idea for me. मैं पी नहीं सकता क्योंकि मेरे डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं. I have to listen to my doctor. ये अपने चिकित्सक की बात सुननी चाहिए. Sorry. Yes, Can we take another question? Pardon? Can we take another question? There's one online. When am I supposed to? It's 2:30. 2:30. Yeah. Yeah. Another question. So there's one question online which says, what guidance can you offer on fostering a more inclusive and supportive environment for lay people? And are there specific practices or activities that can enhance the sense of connection and engagement? Can you do that in Hindi? I'll try. आप क्या बता सकते हैं गृहस्थ लोगों को जिससे कि हम अपना हमारा जो वातावरण है वो धर्म में पुष्ट कर सकें. स्पेसिफिक प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज, क्या हम कुछ स्पेसिफिक चीजें कर सकते हैं ताकि हम अपना जो धर्म से कनेक्शन है, जो एंगेजमेंट है, वो बढ़ा सके. Okay, you're asking a bhikkhu about how to foster something for lay people. Okay, so you see that there's a certain mismatch here. Okay, so I'll do my best, but I have little experience. It's a long time ago. अजान कह रहे हैं कि आप एक भिक्षु से गृहस्थों के बारे में पूछ रहे हैं. मेरा उसमें ज्यादा अनुभव नहीं है और बहुत साल बीत गए जब मैं गृहस्थ था. So good friendship is always helpful, and being a good friend helps find good friends. अच्छी मित्रता बहुत सहायक होती है इसमें और अच्छे मित्रों के माध्यम से और अच्छे मित्र मिलते हैं. So that is a way of connecting. So be a good friend to people. उस तरह से हम लोगों से जुड़ सकते हैं, तो इसलिए लोगों के प्रति लोगों के लिए एक अच्छे मित्र बनना चाहिए. And then nowadays, if you're online, you recognize how much connection there can be online. And that can be helpful. You can have daily emails through a site called readingfaithfully.org. I think. Your baby is crying.
हम बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन मीडियम से भी कनेक्ट कर सकते हैं और एक साइट का बता रहे हैं. readingfaithfully.org. I think you might find it. And something we do tend to forget is that at least since the time of the Buddha, there have been beings that have said, may all beings be well and happy. हम बता रहे हैं कि एक चीज जो हम भूल जाते हैं कि भगवान के समय में भी कई लोग थे जो ऐसी इच्छा करते थे कि सभी लोग प्रसन्न रहें. There have been beings that have said, may all beings born and to be born be well and happy. कई लोग ऐसी भी इच्छा करते थे कि जो लोग उत्पन्न पैदा हो गए हैं और जो पैदा होने वाले हैं वो सभी प्रसन्न रहें, सुखी रहें. If your baby needs feeding, maybe you can take it outside. And since the time of the Lord Buddha, there have been beings that have been saying, may all beings born and to be born. And if you think of to be born, that includes you here and now. और अगर आप उनकी बात करें जो अभी पैदा होने हैं तो वो आप उसमें अपने आप को भी रख सकते हैं क्योंकि हम क्षण प्रतिक्षण पैदा होते रहते हैं नए फॉर्म में. So there have been beings since the time of the Lord Buddha that have been thinking, may you be well and happy. भगवान बुद्ध के समय से कई लोग ऐसे रहे हैं जो ये विचार करते रहे हैं कि आप सब सुखी हो. And if you think back, maybe if you feel that you've been born in previous lives, if you had any connection with the Lord Buddha in previous lives, you have probably thought, may all beings be born and to be born, be well and happy. और यदि आपका किसी जन्म में भगवान बुद्ध से किसी तरह का संबंध रहा हो तो आप भी ऐसा सोच सकते हैं कि जो पैदा हुए हैं और जो पैदा होने वाले हैं वे सभी सुखी रहें. So you wish yourself well. आप अपने लिए शुभकामना रख सकते हैं. Remember that whenever you feel lonely and nobody loves me, well, beings since the time of the Lord Buddha and beings even now are probably chanting Karaniya Matta Kusalena, may all beings be well and happy. Even right now there are beings chanting, may all beings be well and happy somewhere in the world. यदि आप कभी अकेला महसूस करें और लगे कोई मुझे प्रेम नहीं करता तो आप विचार कर सकते हैं कि अभी भी संसार में बहुत लोग होंगे इस समय भी जो ये चांट कर रहे हैं, पाठ कर रहे होंगे, सभी प्राणी सुखी हों. So, but maybe you want something a bit more practical. कह रहे हैं कि कुछ और आपके लिए जो व्यवहारिक हो वो कुछ. And then figure it out. I'm sure that there are online places, and I'm sure also that wherever you are, almost anywhere, even if you're in the middle of, I don't know, in the middle of Central Africa, there'll probably be somebody who's interested in understanding the way things are. There may be people, I know that there's a monastery in Uganda, so all sorts of things are possible. आजकल के ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से आप चाहे संसार में कहीं भी हो, आप अच्छे विचारों से संपर्क कर सकते हैं. बता रहे हैं उदाहरण के लिए कि अगर आप अफ्रीका में भी हो तो वहाँ पे भी एक अच्छी मोनास्ट्री है युगांडा में. And even if you don't feel there's anything around you, then start something. और यदि आपको लगता है कि आपके आसपास कुछ नहीं है तो आप शुरू कर सकते हैं. And figure it out. There might be somebody around who might want to come and
You know, there used to be groups in England where only sort of 4 or 5 people would come on a Tuesday evening and sit meditation together in a small living room. कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे ग्रुप मिल जाएंगे, और बता रहे हैं उदाहरण के लिए कि इंग्लैंड में भी एक ऐसा ग्रुप था जो मंगलवार शाम को मिलते थे और 4-5 ही लोग आते थे, तो साथ बैठ के ध्यान करते थे. So I'm sure that you can figure it out. Don't feel that it's hopeless. Well, if you feel that it's hopeless, don't feel hopeless that it's hopeless. Just find a way around it. ऐसा मैं इमेजिन करें कि सब कुछ होपलेस है, और अगर लगता भी हो तो भी उसको होप, उस होपलेसनेस में होप जगाने की कोशिश की जा सकती है. Okay. Good luck. No. Hindi. आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मैंने ध्यान करना सीखा. उससे पूर्व मैं जानती हूँ कि मुझे कोई जिस प्रकार मैं पूजा पाठ करती थी उसको छोड़कर ध्यान सिखाता तो शायद मैं ना जाती. लेकिन आज ध्यान के मार्ग पर चलकर मुझे शीलों पर काम करना मैं सीख रही हूँ, और आज मैं चाहती हूँ कि मेरे परिवार के सदस्य भी मेरे साथ ध्यान करना सीखें, पर उस ओर किसी का इंटरेस्ट नहीं है. सिर्फ मेरा एक छोटा सा डॉगी है जो मेरे साथ आके बैठ जाता है. तो मैं चाहती हूँ. She says that she has been practicing meditation for 10 years, and before that she used to do the religious Used to do what? various religious prayers. Yes. Now for 10 years she's doing, she has benefited, and but she wants that her other family members should also join her in meditation, but nobody joins except her small dog, who sits with her and meditates. Well done, dog. It's not possible to force people to join you. हम कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है सभी लोगों को आपके साथ ज्वाइन करना. Just to appreciate whatever goodness they do have, or whatever appreciate whatever goodness they do in their life. Appreciate the goodness of their life and find some joy in that. आप जो दूसरे लोग हैं जो कुछ भी वो अच्छा करते हैं उसमें प्रसन्न होकर मुदिता जगाएं और उसी में संतुष्ट रहें. Okay. Yeah, I can't. Yes. It takes a bit of time to connect. Thank you, Ajahn. It's also my first time, and thank you for your presence. A few years ago, I went through a rough phase. It was a very long phase, 2-3 years, where a lot of childhood trauma through memories, through dreams came up, which I had either no memory of or I had not realized the extent of the pain it had caused when I was young. And as a result of it, there was a lot of rage and anger against my parents, which also I did say a lot of things to them at that time. At that time, I didn't know about the Sheel and Buddha, Dhamma. I just knew a little bit about Buddha, but not much. But since then, when the phase got over, the rage and the anger settled. A lot of things happened, and I'm much more calm around my parents, and things have sorted out within me and in our context. But as if a side effect is now created in my heart, in the sense that it's very hard for me to now appreciate people. It's as if the first thing I see is something
a limitation in people. Not that it triggers me or angers me, but I just sometimes feel that I wish I had a softer heart. Related to this is, how does one really genuinely develop metta? Not like just saying that everybody should be happy and all, but really, really feel it. So the question is, how do I grow in appreciation of goodness in others? And how do I develop a heart that really feels metta for all? आचार्य ने उनके प्रश्न का संक्षेप विवरण कहा। पहली बात कि मैं किस तरह से मैत्री, सचमुच में मैत्री मेरे हृदय से जागे और किस तरह से मैं दूसरों के अच्छाई को अप्रिशिएट कर सकूं, उनको भी मुदिता उसमें जाग सके। Testing. It is working. It is working. Okay. Yes. So appreciating goodness in others. Find just something that you like about them. Anything that you think, well, that's beautiful, or that's lovely. They have that good quality. Even if it's just a tiny thing, just practice that sense of, I like the way that they do that, or at least they have some energy, or at least they have some skill in this. I notice this. And that's a way of just noticing what you actually do like about them. दूसरों के बारे में जो भी हम अच्छी गुण देख पाए, बेशक वो बहुत ही छोटा हो, उसको अगर हम ठीक से देखें और उसको अप्रिशिएट करें तो धीरे धीरे हमारे में मुदिता का भाव जागता है। Or appreciate their good fortune, if they've been very lucky or fortunate or something, or they have a very nice something, then appreciate that rather than getting jealous or critical of it. दूसरों के जो अच्छा भाग्य है, सौभाग्य है, या उनके पास कोई ऐसी अच्छी चीज है जिसको आप अच्छा मानते हैं, तो उसके बारे में उसको भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको जान के प्रसन्न हो सकते हैं, इसके बदले कि हम अपने मन में ईर्ष्या जगाएं। At least they've had some good fortune in their life. If they have had some good fortune in their life, allow yourself to appreciate that rather than get jealous of it or envious or try to pull it down in any way. अगर किसी के जीवन में कोई अच्छा है, उनको सौभाग्य है जिससे वो जी रहे हैं, तो उसके प्रति एक प्रसन्नता का भाव रखें, rather than कि इसके बदले कि हम उससे प्रति एक ईर्ष्या का, द्वेष का भाव रखें। You don't have to feel anything particularly, but just notice it at first. Rather than getting caught in negativity, just notice the goodness. आपको कोई महसूस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान दे सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ सचमुच में ऐसा है, इसके बजाय कि आप उसको नीचा दिखाएं या उस पर द्वेष जागे। Yeah, you can come in if you wish to come in. You can stay out if you wish to stay out. Oh, batteries, wonderful. Thank you. Power. So that's the practice of appreciation of goodness in others. And of course, appreciate the goodness in your own life. Appreciate your own good fortune, the fact that you have realized some things, the fact that some things have passed that were very painful. Appreciate that also. जिस तरह दूसरों के गुणों को पहचानते हैं, उसी तरह अपने भी सद्गुणों को हम पहचान के प्रसन्न हो सकते हैं, ये समझ के कि जो मेरी मुश्किलें थी जीवन में वो सब समाप्त हो चुकी हैं, मैं उसको समाप्त कर चुका हूँ, तो उससे भी हम मन में प्रसन्नता जगा सकते हैं।
allow yourself to appreciate the goodness of your life. अपने जीवन में जो अच्छाई है उसको भी अप्रिशिएट करने का आप मौका दीजिए अपने आप को. That you have had enough to eat today. इतनी सी बात कि मुझे खाने के लिए जो आवश्यक था उतना मिला है. Don't blame yourself for not feeling more grateful for it or anything like that, but just allow yourself to think, today was okay. ये जरूरी नहीं कि हम अपने को नीचा करें कि मैं दूसरों के प्रति कृतज्ञ नहीं हूँ, बट ये सोच के कि हम देखो मैं इस समय तो ठीक हूँ. And one day or one moment at a time. और एक क्षण एक दिन एक दिन करके एक क्षण करके ही हम आगे ये आदत बदलते हैं. Find something that will help you smile every day. कुछ ऐसा नोट करिए जिससे कि आपको प्रसन्नता हो, मुस्कुराहट आए मन में. Even if it's just your dog sitting meditation with you. बेशक वो ये हो कि आपका पालतू कुत्ता आपके साथ बैठ के ध्यान कर रहा है. Yeah, it's okay. You know, that sort of sense of it's okay. Yeah. So you have a smile out of. Now, how can I feel metta and loving kindness for all beings? अब उस बात पे कि किस तरह से हम सबके प्रति मैत्री का भाव महसूस कर सकते हैं. Remember, it's the natural expression of a heart freed from ignorance. आपको याद रखना चाहिए कि मैत्री जो है एक शुद्ध चित्त का स्वाभाविक स्वभाव है, उस तरह से जिसमें कि अविद्या समाप्त हुई है. It's natural. It actually doesn't have to be cultivated. ये स्वाभाविक है, इसको एक वास्तव में कोई इसके लिए अभ्यास कल्टीवेट करने की आवश्यकता नहीं. When you're doing it as a metta, as a practice, as a meditation practice, metta for yourself and metta for all beings and all that sort of thing, it's a bit like doing press-ups. जब हम प्रैक्टिस करते हैं मैत्री भावना की और अपने लिए दूसरों के लिए, वो एक तरह से एक एक्सरसाइज है. जैसे कि हम शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए पुशअप्स करते हैं, उसी तरह से मन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक्सरसाइज. At some level, you might think, I don't want to do this. And it might be hard and it might be a strain. कभी आपको रह सकता है कि मैं नहीं करना चाहता ये और ये बहुत मुश्किल है. And that's okay too. वो भी ठीक है. जैसे हम शरीर में कई बार हमको एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम करते हैं. The being that most deserves your metta in the whole universe is जो प्राणी जिसको सबसे अधिक आपकी मैत्री की आवश्यकता है और जो डिजर्व करता है, वो आप खुद स्वयं हैं. Yeah. So complete acceptance of this being that can't spread metta for all beings. तो उस प्राणी के लिए भी पूर्णतः स्वीकृति जो कि दूसरों के लिए मैत्री नहीं कर सकता, वो भी एक अपने में महत्वपूर्ण. And in that there's a sense of this is how it is. और उसमें एक भाव रहता है कि हाँ, इस समय वस्तुस्थिति ऐसी है. And in this sense of this is how it is, there's actually metta for all beings. और जब हम सचमुच में ऐसा एक्सेप्टेंस करते हैं, इस तरह से स्वीकृति देते हैं, उस क्षण में सबके लिए मैत्री का भाव सदा ही निहित है. This being cannot experience metta for all beings. I have metta for this being. And in that recognition, there's actually metta for all beings. जब हम ये जानते हैं, पहचानते हैं कि ये प्राणी में, इस मुझ प्राणी में दूसरों के लिए मैत्री नहीं है, और हम उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो सचमुच उस क्षण हम सचमुच दूसरों के लिए भी मैत्री का भाव जगा रहे हैं. Because there's not a sense of rejection of anybody or anything. In that sense of this being does not feel metta for all beings. I'm accepting this. In that, there's no rejection of anybody. And actually there is metta for all beings. जब हम इस तरह से एक्सेप्ट करते हैं कि ये इस प्राणी में दूसरों के लिए मैत्री नहीं है, तो ये किसी का हम रिजेक्ट नहीं कर रहे. अपने उस प्राणी को भी जिसमें मैत्री नहीं है, वो उसको भी रिजेक्ट नहीं कर रहे,
तो इस भाव में ही निहित है कि हम सबके प्रति मैत्री का भाव रखते हैं. Because there's no dwelling in aversion, there's no trying to push it away, there's just complete acceptance of the fact that there's no metta for anybody. इसमें कोई ऐसा द्वेष का भाव नहीं है, दो चीज हटाने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे में सबके प्रति मैत्री नहीं है. इस बात का एक्सेप्ट करना ही अपने आप में ही कंप्लीट है कि मुझ में अपने प्रति भी जिसके पास मैत्री नहीं है उसके प्रति अगर मेरे मन में मैत्री है तो सबके प्रति अपने आप ही हो जाएगी. And there's not even a trying to make metta for all beings, because there's a complete acceptance, there's no metta for anybody. It's just like this. इसलिए उसके लिए कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है. इस तरह से एक्सेप्टेंस करते करते धीरे धीरे स्वतः ही हो जाएगा. And you can see how that makes you smile and feel at ease. And that's actually metta for all beings. इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको थोड़ी प्रसन्नता होती है, मुस्कुराहट होती है, तो यही इस अपने में सबके लिए मैत्री का भाव जगाती है. I should be feeling loving kindness for all beings above, below, round about. It all seems a bit ridiculous, but it's like this. And I don't reject anybody. I don't reject anything. I'm not dwelling in any, and there's all sorts of other things happening, but there's no rejection happening. Because there's kindness for this being now, which feels like this. तो जब हम ग्रैंड विचार सकते हैं कि मुझे ऊपर नीचे चारों दिशाओं में सबके प्रति मैत्री होनी चाहिए और नहीं हो पा रही है, तो उससे बेचैन होने की जगह अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो स्वतः ही मन हमारा शांत हो जाता है और एक स्थिति आ जाती है कि हम सबके प्रति मैत्री उसमें निहित है, अपनी शांति में सबके प्रति मैत्री निहित. You know, the story I always tell is that there was this abbot that used to always say, we will now sit and practice metta for all beings for the next 24 hours in rotation, 4 months here, 4 months. And my mind would just go, no way. And I thought that there was something wrong with me, but there wasn't. एबर्ट कहते थे कि अब हम अगले 24 घंटों तक सबके लिए मैत्री रखेंगे एक एक करके, तो मुझे लगता था कि ऐसा संभव नहीं है. Because, you know, in the sutras it says, if metta is developed and there's no further insight, then the rebirth is in the realm of infinite radiance. तो में बात कही जाती है कि अगर मैत्री बनाई जाती है और उसमें कोई अंतर्दृष्टि नहीं है, इंसाइट नहीं है, तो आपका पुनर्जन्म एक आभासर लोक में होगा. But if there's no further insight, it means there's no insight into the whole way the whole thing's happening. So if your practice of metta brings up insight into what's happening, then it's liberating. You don't get reborn in the realm of infinite radiance. There's just liberation, and that is automatically metta. और अगर आप मैत्री करते समय आपके अंदर इंसाइट अंतर्दृष्टि भी जागती है, तो वो आपको दोबारा जन्म नहीं देती, आपको मुक्ति की ओर ले जाती है. उसमें भी मैत्रा खुद ही निहित है. Because automatically the heart that's free from ignorance radiates metta, karuna, mudita, upekkha through all the world systems. जो चित्त में अविद्या दूर हो जाती है, इग्नोरेंस हट जाती है, तो उसमें मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा सभी तरफ अपने आप ही उससे प्रस्फुटित होती है. Okay, thank you. Good luck. Time for me to have a break, or to go downstairs and change posture and change audience. Thank you. Thank you.